गुड इवनिंग और गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम एक नया दौर पे चल रहे हैं और हम ये जो ग्लोबल पावर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। राइट, ये क्या पावर मैट्रिक्स है, क्या सब कुछ है, इसके बारे में क्या है इस राइट टू गेट द फंडामेंटल्स क्लियर एंड करेक्ट। I have with me Brigadier Arun Sehgal. We'll just welcome him. Sir, good Thank evening you. and welcome to Gunner Shot once again. It's a Thank great you, honor sir. that you are here with us. And मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इन्हीं का आइडिया था कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि अभी जो जैसे मैंने कल भी बताया हमारे अपडेट में, इंडिया उस दौर पे आ गया है और उस मोड पे आ गया है। हमें सोच विचार करना, अलग सोच विचार करने की जरूरत है। So the whole idea is global metrics. So give your opening comments and then I'll give a small presentation, then we'll follow it up, sir. Absolutely correct, sir. Go ahead. Thank you, sir. मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ ये हमने ये सिलसिला क्यों शुरू किया। राइट, अगर आप देखेंगे ये यूक्रेन वॉर और ये जो पेंडेमिक जो शुरू हुआ था, उसमें क्या हुआ? फूड, एनर्जी और रिसोर्सेस ये सीमित हैं और दुनिया के लिए कम है और ये एट रिस्क है। राइट, इनका वेपनाइजेशन हो रहा है, देश इनको वेपनाइज कर रहे हैं और ये जो ग्रेट पावर कंपटीशन है, बड़े बड़े शक्ति दुनिया में जो इनका जो कंपटीशन है, ये इनके जरिए लड़ा जा रहा है। लड़ाई जो है नया तरीका है और पिछले 1-2 साल में या 2020 से लेकर आज तक ये उभर के आया है कि इंडिया इज अ सेंट्रल एंड स्विंग पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। और ये जो स्विंग पावर का आइडिया है, एक सैमुअल हंटिंगटन ने दिया था उनके किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में, कि ये जो इंडिया जो है स्विंग पावर है। स्विंग पावर का मतलब जिस तरीके से इंडिया झुकेगा या स्विंग करेगा, उनका पलटा भारी हो जाएगा। पर ये भी मेरे ख्याल में ये दौर भी चला गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ जो है, ये जापान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का पेपर उन्होंने जो पब्लिश किया है, उसको में से एक ग्राफ है। इसमें क्या बोलता है? ये बोलते हैं कि इंडिया का जीडीपी जापान को 2025 में पार करेगा, यानी कि 2 साल के बाद। और ये बोलते हैं कि 2030 तक हमारा जो जीडीपी तकरीबन $7 ट्रिलियन हो जाएगा। उसके साथ साथ इमेजिन 2020 जो एक डॉइश बैंक का पेपर है, राइट, उन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू टच $7 ट्रिलियन बाय 2030। और वो उनका मानना ये है कि ये कंजर्वेटिव फिगर है, यानी कि इससे ज्यादा ही होगा। मॉर्गन स्टैनली जो बोलता है कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। तकरीबन जापान का जो अनुमान है उसी प्रकार है। और इसके अलावा गार्डियन ने भी बोला है, फ्रांस में भी एक रिपोर्ट ने बोला है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जिक्र किया है, और यहां तक साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी बोला है इंडिया इज कमिंग अप एज अ थर्ड पोल। ओके, अभी अगर आप इंडिया और बाकी देशों का तुलना करेंगे तो कुछ चीज उभर आता है। सबसे पहले बात यह है कि इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं यार ऐसे तो सब बोलते हैं हमारे को लुभाने के लिए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए, पर ये होगा नहीं क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर आप देखिए, जापान, जर्मनी और चाइना जो हमसे आगे हैं, इनका अर्थव्यवस्था हमसे आगे है, यूएसए को छोड़ दीजिए, ये तीनों देश टूटे हुए देश थे एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, खास करके जापान और जर्मनी। इनका पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ मार्शल प्लान के जरिए और मैकार्थर का प्लान के जरिए जापान का, और इनका रीबूट हुआ था इकोनॉमी थ्रू यूएसए। चाइना का इकोनॉमी रीबूट हुआ था 1971 में के बाद, जब निक्सन माओ को मिलने गए थे। ये तीनों एडेड पावर्स हैं, इनका अर्थव्यवस्था को पुश किया गया है
थ्रू यूएसए एंड वेस्टर्न पावर्स, इनको पूरा हेल्प किया। और इनका पिछले 25-30 साल, इनफैक्ट जर्मनी और जापान का पीस डिविडेंड रहा पिछले विश्व युद्ध के बाद, और चाइना का पीस डिविडेंड मिला है 1979 में वियतनाम के बाद, वियतनाम वॉर के बाद। इनको कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। पर उसके तुलना में इंडिया का देखिए, इंडिया को बहुत कष्ट झेलना पड़ा, हमें नेचुरल डिजास्टर्स झेलने पड़े, अकाल होते थे, फैमिन्स होते थे, ये फ्लड्स होते थे, सुनामी, अर्थक्वेक सब होते थे, जिससे बहुत नष्ट होता था। 3-4 वॉर हमने लड़ लिया, 47, 62, 65, बांग्लादेश, और उसके बाद 71, उसके अलावा ऑप्विजे और प्रॉक्सी वॉर्स और इंसर्जेंसी, अलगाववादी, बहुत चीज हमने झेल लिया। उसके बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। इसके अलावा we were under international sanctions. I remember 84 when I was part of 88 when I was part of IGMDP with Dr. Abdul Kalam. We were under MTCR. और उन दिनों में हमें कुछ नहीं मिलता था। जब हमने 74 में हमने पोखरण का ब्लास्ट किया था, तब से लेकर ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले तक we were under international sanctions. एक अभी भी इंटरनेशनल सैंक्शंस के मोड पे खड़े हैं, राइट? कभी बोलते हैं कि हमने S-400 ले लिया तो सैंक्शंस रिजीम में आ जाएंगे, तो हमें हमारा काटसा, राइट? तो आप देखिए, जो बड़े बड़े पावर हैं उनका क्या है, ये ग्रेट पावर्स हैव द कैपेसिटी टू स्टीयर, इन्फ्लुएंस एंड शेप ग्लोबल इवेंट्स। दुनिया में क्या हो रहा है उनके ऊपर बोलबाला है, और उनके अलावा बहुत ग्लोबल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। आप इस तुलना में, ये जो मैंने बताया, इस तुलना में आप देखिए, इंडिया जो है पिछले 3 साल से एक सेंट्रलिटी पाया है दुनिया में। आज के दिन दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम हैं उनका सॉल्यूशन इंडिया में है। आप देख लीजिए, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, या आप कोरोना वायरस को लड़ने के लिए, उनका सॉल्यूशन इंडिया में है। आज एनर्जी में भी, क्योंकि इंडिया का एनर्जी रिफाइनिंग कैपेसिटी इतना है, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द एनर्जी, वी आर अ सॉल्यूशन फॉर द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड, राइट? कॉन्वर्सली, जो बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि इंडिया के बिना वो सॉल्व ही नहीं हो सकते। अगर आज के दिन इंडिया ग्लोबल रिसेशन से बाहर आना है तो इंडिया की जरूरत होती है। इसका मतलब जो इंडिया का पोजीशन लेता है, हम जो लेंगे, जो इख्तियार करेंगे, और हमारा जो रवैया है, इट विल मेक अ डिफरेंस टू द ग्लोब। तो इस हालत में क्या हम अभी भी स्विंग पावर है, या हम एक बड़ा पावर उभर के आए हैं, राइट? आप देखिए, ये 3 महीने पहले ये कार्टून निकला था। कौन है प्रतिनिधि इन 4 में? हमारे ये चारों देश हैं, और इसीलिए हमें इन चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। और इंडिया नीड्स टू बिहेव लाइक अ ग्रेट पावर। आज ना सही, पर जब हम, आपका इकोनॉमी 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, आप एक ग्रेट पावर होंगे, हम एक ग्रेट पावर होंगे, और उसके लिए आज से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए ये हमने मैट्रिक्स बनाया, वो कार्टून को मैट्रिक्स बना दिया। अगर आप देखिएगा तो ये जो चतुर्भुज हमने बनाया, इसमें के 4 कोने में यूएसए, चाइना, इंडिया और रशिया है। यूएसए और इंडिया के बीच में भी डायगोनल के जरिए खिंचाव है। उसी तरीके से रशिया और चाइना के बीच में खिंचाव है। बाकी जहां तक चाइना है, यूएसए और इंडिया के साथ रिपल्शन है। उसी तरीके से यूएसए का रशिया और चाइना के साथ रिपल्शन है, और इसमें रशिया और इंडिया का अट्रैक्शन है। ये एक अजीब तरीका है। यहां कोई डेफिनेशन नहीं है कौन किसके साथ है, राइट? इंडिया हैज टू बिहेव लाइक अ बिग पावर टू सॉल्व एंड नेविगेट इट्स वे ग्लोबली हियर आफ्टर। इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ मुद्दे हैं, हम जानना चाहते हैं
कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इंडिया कहाँ है उसमें, राइट? इंडिया आप आफ्टर ऑल जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया और यूएस दोनों के लिए, राइट? हम बहुत मल्टीपल इक्वेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और इसका हर एक का एक नतीजा है। क्या इंडिया यूएस पार्टनरशिप बैलेंस करेगा चाइना को, और क्या इंडिया और रशिया का पार्टनरशिप चाइना को बैलेंस करेगा? और अगर इंडिया रशिया पार्टनरशिप के साथ हम यूएसए के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस वो कैसे हमें इट विल इम्पैक्ट अस, राइट? ये सब चीजें हमें वी विल थिंक ओवर फॉर द नेक्स्ट 3-4 days, राइट? हर एक इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए के एक एक लेंगे और फिर हम आकर वापस आएंगे एंड हैव अ फाइनल डिस्कशन। तो इसके साथ आई विल रिक्वेस्ट ब्रिगेडियर अरुण सहगल सर, you please put up your views on the emerging power dynamics in the globe and your thing. I've given my presentation. You frame your things. Once आप अगर frame करेंगे, then we'll have a little guftagu and see what are the things which you have to focus on in the series ahead. Over to you, sir. Thank you, General Shankar sir. It's always a pleasure, and the way you put things up are absolutely cogent way, and they are striking, absolutely striking. Can I have that slide, please, of the quadrilateral or the Yeah, or the yes, global sir. perspective? Yes. See, when we are looking the global order, this is how the global order is emerging. The new global order is defined by interplay of forces between US-led West, or what we call an Euro-Atlantic alliance, the rising China, Russia, which is a strong major power, which is at this point in time engulfed in a war in Ukraine, and standalone power called India, which is partners everyone, but it is not an ally of anyone. This is the most important issue that we need to look at. The important point to note is that the equation that we are seeing is the equation that is going to stay. ये equation जो हम देख रहे हैं ये अगले 15-20 साल तक स्टे करेगी, इसके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला। वेस्टर्न लेड अलायंस सिस्टम जो है वो अपना यूनिलैटरल करेगा, यूनिलैटरल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उनको सूट करता है। वो पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर उन्होंने बनाया हुआ है, जिससे अंदर उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल मिलिट्री के ऊपर उन्होंने एक तरह से अपना दबाव बना के रखा हुआ है। साथ में है चाइना और उसके बाद रशिया। तो नाउ मैं आपसे एक एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्लोबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। US alliance system is a maritime oriented alliance system. ये जो है ये सी बेस्ड सी लाइन्स को कंट्रोल करता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स से अटलांटिक की सी लाइन को करता है, साउथ में इसका मेडिटेरियन सी लाइन के ऊपर इसका जोर है, एंड ऑफशोर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक ऑफशोर पावर है जो एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, एंड अपने अलाइज के साथ मिलके जो उसके मेजर अलाइज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया, और अभी उसके साथ एक फिलीपींस भी मिल गया है। तो उसके साथ बैठ के वो जो है ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक को कंट्रोल करता है। ये है वो जो है ये इसका जो है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मैरीटाइम ओरिएंटेड जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। उसके बदलाव में बोथ चाइना एंड रशिया जो है एक कंबाइन है, इसको हम कहते हैं यूरेशिया सेंट्रिक पावर स्ट्रक्चर और
और कॉन्टिनेंटल पावर स्ट्रक्चर है, इसकी जो इन्फ्लुएंस है ईस्टर्न यूरोप से लेके व्लादिवोस्टॉक तक है, एंड नॉर्थ में मंगोलिया से लेके साउथ तक जो है एक अबट करती है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, एंड गोइंग अप टू सेंट्रल एशिया। आई मीन दैट इज चाइना का जो एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये एक जो है ये रशिया और चाइना का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल power equations. But what has happened lately is that both Russia as well as China are attempting to create their zones of influence along the Asian rimland, extending up to Arctic, and it is also trying to make through the Indian Ocean control over the Indian Ocean sea routes, the West Asia, and going up to the East Asian, East African, East Africa, जहाँ पे इन्होंने जिबूती में एक बहुत बड़ा बेस है और साथ में वो नए बेसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ उनकी दोस्ती हो गई है, ईरान के साथ दोस्ती हो गई है, अभी पीछे उन्होंने बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज करी थी। सो ये है मैट्रिक्स। इसके अंदर भारत कहाँ फिट होता है? भारत की सेंट्रलिटी ये है कि भारत जो है एक इंडियन ओशन पावर है। ये पूरा जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है एक तरह से मेडिटेरेनियन की और ईस्ट एशिया की, ये कनेक्टिविटी जो है इसको भारत कंट्रोल करता है। हालांकि भारत को नॉर्थ के अंदर चाइना से चैलेंज है, परंतु वो जो है बाय एंड लार्ज जो है लिमिटेड चैलेंज है, क्योंकि चाइना के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करके हमारे देश के अंदर आगे बड़ी बड़ी टेरिटरी को कब्जा कर रहे, क्योंकि हमारे पास अपनी क्षमता बहुत ज़्यादा है। वी आर अ स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग military power, and it's not possible for China to occupy large scales of the Indian territory like something like Ukraine is happening. Ukraine cannot happen to India on the northern borders, nor it can happen on the western borders. If at all, it is the obverse can happen, that we will, over a period of time, once our economy and our military capacity, our Atmanirbhar programs take off, and also post the recent alliances, I mean, recent close relationship, defense cooperative relationship with America comes about, we would be much more stronger power. So, India, in effect, is a connector between the Euro-Atlantic alliance on one hand and the China-centric capacities in the South China Sea as well as East China Sea on the other hand. And you cannot bypass, the trade cannot bypass India or the Indian Ocean region, where India is a central power. The centricity of the India lies in the fact that no major global economic, trade, and security matrix can be determined without taking India into consideration, particularly because although the war in Ukraine is going on in Europe, but the global fulcrum of power has shifted to Indo-Pacific. And in Indo-Pacific, the Indian Ocean, which is the most connective ocean, is the one which India controls. And therefore, it has become very important to understand that India is not a swing power, but India is a balancing power. India provides balance through its Act East policy, through its I2U2 policy, through its connections with West Asia, through its connection with Southeast Asia, and through the quadrilateral, a degree of balance for rule-based order, respect of sovereignty, and ensuring that the maritime trade routes are kept open. Like to intervene and make any comments? I'll stop here for a while. आई थिंक यू मेड, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया सर, और ये एक कमेंट भी आया है कि इंडिया controls the fulcrum between the
Eurocentric NATO alliance or the North Atlantic alliance, and the Asia-centric Eurasian alliance. I'll call the China, He's much Russo-Chinese better. He put it alliance. better than I have. No, it's a fulcrum, and it gives balance. I think these two words are very important. So we are a balancing power, and like someone said, Bahar Kanhere, he's made a comment. उन्होंने बोला कि in this equation, only India can be a binding force, else other three can't stand each other. I think he's made a very crucial point. Yeah. So, apart from being a fulcrum or a balancing power, if these three have to coexist, they all need India. And as days go by, और जैसे आपने बताया, as days go by and as our economy goes up and go up, there is no choice on that, right? We will Okay. see that things will change. So I would like you to comment on this change in the Indian psyche which we need to have, and the fact that from being a swing state, we have to be a balancing power. How do you see these dynamics going first from the Okay. India-centric point of view, and then we'll talk. Okay. On the issue of India started looking at itself as a balancing power and not a swing state, the logic and the rationale basically sit is that can India be a net security provider? And what do I mean by net security provider? What I mean is that there is always a concern about the Chinese influence in Southeast Asia. There are Laos, Cambodia, to a degree Thailand are becoming under the influence of China. Myanmar is already under influence of China. The oligarchs, Chinese oligarchs control Indonesia, the biggest power over here. Vietnam, although it has done its peace with China, but with the West, continues to have concerns of the Chinese. So the question basically is this: it is India's strong capacity, capability, and influence, both military and more than military, economic and cultural. And cultural is also very important. Are the elements that provide a degree of reassurance to these states, particularly Southeast Asia, which is a wedge between the two oceans, the Indian Ocean and the Pacific Ocean, and to provide them with the ability to sustain domination, economic, political, technological domination by other major powers in this region. And therefore, if India, that's why started off from look east to act east policy. The whole idea behind the act east policy was that we need to be proactive. We need to connect with. So this is an important issue. The second element is this: the capacities and the capabilities that India has are central to maintaining balance in the region of the Indo-Pacific. If the East Asia is the eastern bookend, the Western Indian Ocean is the western bookend. And the western bookend centrality lies in the fact is this: that China, despite being a strong maritime power, it has to have a breakout from the constraints of the South China Sea where it is located. China is being pushed from two different directions, something which we do not tend to analyze seriously. On this eastern flank is the first island chain, and now it is coming down through the Bai Channel into the Philippines. Now, this is an area which is by and large close to the Chinese. Chinese, if at all want to break out of this thing, will have to fight itself out. As far as the Indian Ocean is concerned, the Chinese will have to push their naval forces and their military capabilities through the three straits, Sunda, Lombok, and the Malacca Straits, where they can be bottled and they can be controlled. So the issue with the Chinese is, and from Indian perspective, it is important to understand
that we need to have relationships, cooperation, and capacities to prevent or to at least ensure that these the narrow straits, from where the Chinese will have to uh, break out from, are kept under surveillance. They can go via Australia, but that's a longer route. That Yeah, doesn't suit. that's a very long route, sir. So the point is that China. Why do I say China is a continental power? The China is a continental power is that the Chinese PLN Navy is the strongest navy. Agreed. It has got three aircraft carriers. It's got a large number of LPTs and other elements and long. But essentially speaking, when you look at closely at anti-excess area denial strategy, it's an offensive defense strategy. It's not an offensive strategy. The entire strategy of the Chinese is offensive defense. Please note that point. And there's a logic behind this. The logic of Yeah, please, sir. I'll add the, on to what you're saying. the logic of the offensive defense strategy is that the east coast of China, which is the heartland of the Han Chinese, is in the show window. Any retaliation against the Chinese would be directly on its heartland, Heartlands. the territorial and the economic centers along the east coast, that is Shanghai, Beijing, and northward going up. So Shanghai, so Guangzhou and all that. So this is what I'm trying to explain to you. The point to understand is this: Chinese influence is there. It's a strong military power given, but please remember, like we are seeing in Ukraine, having power is one thing, applying power is another Is thing, another thing. and capabilities. The Yeah, I question is, understand what you're saying. so we tend to what I call self-deter ourselves in our perceptions. So when I Right. say India is a balancing power, India has to have a little more of an outgoing strategic vision, which should not get constrained by the Malacca Strait or the Western Arabian Sea. But India must look at itself as a country which, in another 10 years, will have to fight for strategic spaces and, of course, and regain influence in strategic spaces of its choice. And for that, it has to prepare itself. Thank you. Right, sir. Now you focused on this side, on the east, with ASEAN, Southeast Asian countries, with China and all that. इसके अलावा हमें वेस्ट एशिया में भी देखने की जरूरत है एज अ पावर इन इट्स ओन राइट, क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंस वहाँ काफी है, यहाँ से लेकर इसराइल तक और अफ्रीका, आई इंक्लूड अफ्रीका आल्सो इन द वेस्ट, और द इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन कॉन्स्ट्रक्ट, दैट्स द वे आई पुट इट. और आज हम देख रहे हैं कि चाइना क्या है, वहां अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है, और फैलाने के चक्कर में आज भी इनका मीटिंग्स हुए हैं सऊदी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और चाइना के बीच में, ताकि उनका इकोनॉमिक टाइज बढ़े. सो एंड ऑफ कोर्स यू हैव पाकिस्तान तो है ही, विच इज हेल्पिंग चाइना एंटर दैट एरिया. तो इस लिहाज से as India gains power or India goes up the power ladder, as our economy goes up, I think there's a major role we have in the West Asia, I'll answer that. the Middle East, and the African coast. Your views, sir? See, why did we go in for a concept called ITU2? Yes, I wanted you to highlight that. ITU2 is an economic concept. What happened 2 months back in May? In fact, on 6th of May, what happened? In the meeting of the NSAs of the four countries, UAE, India, United States, and Israel, we came out with this new strategy called the rail corridors. The whole idea was starting from Haifa, going north to the Saudi Peninsula, we will create a mixture of railway lines, high speed OFC capability,
Where there are gaps cannot be controlled by railway lines. We'll create a road network and carry down further through the Indian Ocean through back end connectivity to India, to the Indian ports of Nhava Sheva and Mumbai, etc. So now what happens is there is a dedicated container traffic which will Flow. move from, let's say, from Saudi Arabia. It will move down to the railway corridors, get down to the ships, and gets off in Mumbai. We will provide other trade capacities. So what are you doing? You are now providing the means of transportation and opening up this region into a massive trade. And added to that, you inject what is called the digitization. Digitization is a huge element in terms of our capacities. You provide health, you provide other support systems which are relevant to the region. So you are creating a big geo-economic environment which is sustaining the development of the region and providing support to India. And also, as a result of this, these major states start investing. Now, this kind of situation cannot be copied by China. China can broker peace, but cannot be copied. Now, what is happening in Iran? We just had a meeting today with the senior government official who was trying to explain to us why INSTC is suddenly being given a projection. We are now creating a rail link to Azerbaijan and so that we then reach directly to Europe. Okay, so the question basically is this: Chabahar port, okay, and the what is that famous port North of South corridors. Bandar North Abbas? South corridor. Bandar Abbas. Yes. Yeah, same port. So those this thing, the whole idea is that we are conscious of the fact that the Pakistan will remain a bad boy. Okay, so we are willing to pay the cost, but yet the basic issue is we'll have corridors open. They are transportation corridors. We are creating a huge container, high level container movement capacities, and what we are doing is doing a direct connectivity to Europe, and which the important part between this connectivity and what is the Central Asian connectivity of the Chinese is that we'll have a two-way trade. Chinese do not have a two-way trade because we will not carry goods not only for India, but we will carry But goods for East Asia, Southeast Asia, everyone else in this region. Chinese, on the other hand, packs up a train, sends it to Europe along the Eurasian rail. rail. What do they get back? They get baby Nothing. powder. No, That's nothing. all that They they get can nothing get. else. They get. See, so this is what the important. We have to understand in geopolitical terms where India is and how India is leveraging its power and capacities. And I would like to say that it's heartening to note that the government and the system are highly cognizant of this, and they are moving heaven and earth to ensure that these capacities are created and these capacities are sustained and these capacities become a good investment ventures for India's economic growth. सर थैंक यू, आपने बहुत विस्तार में बताया कि इंडिया का जो शक्ति जैसे हमारा अर्थव्यवस्था बढ़ता जाएगा और इसके बारे में हमें बड़ा पूरा ज्ञान है और वी आर अवेयर ऑफ दिस एट द नेशनल लेवल। हम ईस्ट को भी देख रहे हैं और वेस्ट को भी देख रहे हैं। वेस्ट एशिया जिसके साथ हमारा कल्चरल लिंक्स हैं और हिस्टोरिक लिंक्स हैं वो हम मजबूत कर रहे हैं, राइट। इस विषय में एट दिस पॉइंट मैं तो आई एम गोइंग टू डाइग्रेस, मैं थोड़ा इस विषय से बाहर जाना चाहता हूं और एक बहुत आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल एंड आई विल कम बैक। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे यार ये दो फौजी क्या बात कर रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं कैसे क्या इंडिया एक बड़ा महाशक्ति बनने वाला है, क्या हो पाएगा? आज तक तो वो तो नजारा है ही नहीं। ओके, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, और बड़ा बोला है कि चाइना विल एस्टैब्लिश अ थोरियम बेस्ड रिएक्टर, न्यूक्लियर Yeah, रिएक्टर yeah, 2 yeah. मेगावाट, आज Two मोल्टन mega, सॉल्ट two रिएक्टर 2 megawatt मेगावाट, in the Gobi Desert. गोबी डेजर्ट, Yeah. राइट। और ये बोल रहे हैं कि बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू है, इसके साथ एनर्जी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी है, जय चाइना वाले जैसे बोलते हैं। मैं हमारे सब श्रोताओं को बताना चाहता हूं, दुनिया में 50% से ज्यादा थोरियम का रिजर्व्स कहाँ है? केरला के Yeah. बीचेस के ऊपर है, वो भरा पड़ा है, ठीक है। थोरियम रिएक्टर और थोरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन लीडिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिसर्च करता है? इंडिया। आपको बताना चाहता हूं, जो आज चाइना करना चाहता है थोरियम के साथ, और वो बोलता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को 10 साल के बाद हम स्टेबलाइज करेंगे, हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम रिएक्टर हमारे पास कलपाकम में पड़ा है, और हम उससे बिजली उत्पादन Working. कर I've रहे seen हैं। it. I've seen it. बिजली उत्पादन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक दिन इसके पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं कर्नल शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है। इससे क्या जाहिर होता है, हर चीज जो चाइना बोलता है कि हम टेक्निकली ये है, हम वो है, नहीं है। इंडिया के अपने शक्ति है, राइट, और वो उभर के आ रहा है, राइट। हम वापस आ जाते हैं वो क्वाड्रिलैटरल में। Okay. तो हमने, या प्लीज सर। Now I'll take on the United States. Okay. Yes. Okay. Oh, I actually was coming there only, so you Okay. preempted me. Now, there are 2-3 things we need to understand in geopolitical terms. Whatever way we want to look at, one of the ways, at least from my perspective, looking at it is this: United States presence in East Asia and is trying to carve out a quadrilateral, AUKUS, and a large number of minilaterals with Korea, Australia, Philippines, etc., is something which is providing India with what we call collateral benefits. Why are they collateral benefits? The logic and the rationale is very simple. China cannot take its focus off, its military and its security focus off from East Asia and the ongoing American challenge. This reduces its capacity and capability to deal with India and to pose a threat which is which, like I said, we have this habit of self-deterring us. We overplay ourselves, particularly on the line of control. Second issue is this whole issue of Indo-US Defense Cooperation. I can say we did a big project for National Security Council, and based on my discussions, etc., I can say with authority what is on offer from the United States post Austin's visit, post Mr. Sullivan's visit, the National Security Advisor's visit, is something which is unexceptional from the American side anywhere. You are going to get technologies, at least an access to technologies. You are going to get access to systems which we have been vying for some time and which for various reasons have not happened. So, in short, there's going to be a sea change in our defense cooperation relationships. Added to that is this whole notion, whole idea of initiative on critical and emerging technologies. Now, that is going to push India forward, particularly in quantum computing, underwater unmanned water systems, our ISR capacities, our telecommunications are because of our good telecommunication systems and other
capacity, we'll also have stabilized power equations. Just to give you an understanding, you can put a $5 billion chip making plant in India, okay? But if you cannot sustain the levels of water, if you cannot sustain the levels of electricity at a particular temperatures and capacity, and if you do not have the skill sets, you cannot run that issue. So now what you're gonna do is, and why this whole issue is now, ISET has gone into the private sector, and the private sector is gung ho about it. Is that they are already putting up capacities to develop both the skill set as well as the infrastructure for managing these things, and of course there is the AI and the cyber. So what is happening is that in another 5 to 10 years time, if these things come forth, and I have no reason to believe that this is not going to happen, you will see a different capacities and capabilities of India, which will provide us with a much greater degree of deterrence, strategic deterrence. I'm not talking about military deterrence. I'm talking about Yes, see, strategic deterrence. strategic deterrence. I would call And it national deterrence. okay, we'll have a national deterrence vis-a-vis our challenges. So once that happens, I go back to my old equation of the balancing factor, India with unnecessary prayer. You will now become an important player. Somebody people will look up to you, and you will create strategic equities, and you will create strategic interest in a much wider region, which we just talked about. So, what I want to try to say is this: that if we can pull this thing off with the United States, and because once you get the United States, then the Europeans also keep coming back. So they are Yes, pitfalls. वो तो पीछे आ जाएंगे. They will start coming back. So you will have a very different framework of it. That does not mean by any chance that we give up our relationship with Russia. Russia. I No, was coming to that, sir. Russia relationship is important, but of course, the problem is Russia itself is in a bit of a bind, particularly both in terms of his continuing military war with Ukraine and the consequential economic effects of sanctions, etc., etc. It is in a bind. So there would be a decline in trade, but India is not in the business of leaving his friends in this thing when they are. So India will continue to buy, but accent on buying high technology capacities, which are what we call the force multiplier capacities in technological capacity and asymmetric capabilities to deal with the challenges that we're going to face, will come from, unfortunately, from the West. So this is something which is the new equations we'll have to deal with. So if for India, while the globally the world is in a bit of a disarray, for India, it's a bit of a global movement, a golden movement for it to use its power, use its influence positively to clear capacities and capabilities to honor what the Deutsche Bank says of a 77 $7 billion Mm. economy, or what the Japanese say India will become a $10 trillion economy by 2030. So this is what I say Right, is a positive moment for India. right. जो आपने बताया, आपने जो दृश्य बताया और जिसके साथ मैं 100% सहमत हूं, वो ये है कि इंडिया उस दौर पे खड़ा है, भारत उस दौर पे खड़ा है कि मेरे ख्याल में ये ओके, मैं वापस 91 में चलूंगा. 91 में हमारा क्या स्थिति था और 92 के बाद जो हमारा चढ़ाव हुआ है, उसके बाद हम प्लेटो कर चुके थे और दोबारा 2023 में ये मौका मिल रहा है. 91 मूवमेंट है ये, रीडक्स, ताकि हम ऊपर चढ़ सकते हैं आगे, राइट. और मेरे ख्याल में ये हमारा देश को जो दूसरा अवसर, सुनहरा अवसर मिल रहा है, हम खोएंगे नहीं. हम खोएंगे नहीं कि बहुत रीजंस हैं, पर मैंने पहले जो बताया, हमारा वो अंदरूनी शक्ति इंडिया के अंदर वो है कि
चाहे कोई भी मुश्किल हो सामने, हम कर सकते हैं, राइट। ये हमारा इतिहास है जो मैंने पहले बताया। तो आगे जब हमारा ये काफी हद तक हमारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे तो आगे बढ़ना संभव है, राइट। तो आज का जो ये है, हमने पूरा स्टेज सेटिंग किया है कि इंडिया का रोल फ्यूचर में क्या होगा, बैलेंसिंग रोल होगा, फलक्रम रोल होगा। एंड मेरे ख्याल में और मेरा इट इज माय विजुअलाइजेशन सर, दैट इंडिया विल हैव अ कंट्रोलिंग रोल इन द इंडियन ओशन इन फ्यूचर। Absolutely right, sir. आज के दिन कोई बोल सकता है कि या ये स्विंग स्टेट है, कल के दिन कोई बोल सकता है ये फलक्रम स्टेट है, बैलेंसिंग पावर है। पर जैसे जैसे हमारा जो अर्थव्यवस्था और हमारा शक्ति बढ़ता जाएगा, और वो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट, फिर वी विल बिकम अ कंट्रोलिंग पावर इन दिस रीजन, राइट। जब हम Absolutely. एक कंट्रोलिंग पावर हो जाएंगे इन द इंडियन ओशन रीजन, देन वी विल आल्सो बी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ ग्लोबल पावर। और ये मैं अगले 10 साल के अंदर, 5 से 10 साल तक ये जो बदलाव है वो मैं नजर आ रहा है हमें, राइट, राइट। यस सर, प्लीज। एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा, ये सब पॉसिबल है एज लॉन्ग एज हमारे पास अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वी एज अ नेशन हैज टू बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस that we can do it. We can do it. We are a great power. We are a we have the equities to be a great power. We have capacities to be a great power. We have the tolerance and the level of national ethos to be a great power. So we need to have that positive perception of our own capacities and capabilities. आपने सही बताया सर कि ये सब तभी मुमकिन होगा जब हमारा खुद का आत्मविश्वास बढ़े। आत्मनिर्भरता एक चीज है, पर आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। Yes, absolutely. राइट, राइट। और अगर हम सोचते रहते हैं छोटे छोटे चीजों के ऊपर, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर अगर हम सोचते रहेंगे तो हम थोड़ा इसमें खींचाव होगा। इसके बावजूद हम आगे बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। पर ये समय आ गया है कि हम बड़ा सोचें, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम किया, राइट। आज हमने जो क्या किया है कि पूरा विस्तार में बता दिया कि ये प्रोग्राम की जरूरत क्या है, वगैरह वगैरह। पर अगले 3 प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इंडिया और यूएसए का क्या रिलेशनशिप है, इंडिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है, और इंडिया और रशिया का क्या रिलेशनशिप है। जब ये रिलेशनशिप हम एग्जामिन करेंगे, तब ये भी देखेंगे उनका क्या इक्वेशन है, उनका क्या ग्लोबल इक्वेशन है, उनका क्या ग्लोबल इक्वेशन उभर के आ रहा है, और उनका इंडिया के साथ क्या नाता है, उनके नजरिया से भी हम इसको एनालाइज करेंगे। सर, इफ यू हैव एनी मोर व्यूज ऑन